माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी. Honorable members, before we start, you are asking a point of order. Please, everyone, in your seats. आप लोग बैठे, सब लोग बैठे. आप लोग point of order बुलाते हैं, point of order मांगते हैं. मैंने भी point of order दिए हैं. I'm only referring to again Rule 235, and I would like to repeat Rule 235, 6, 7, 8, 9, and it's specifically 7, 8, 9. I'd like all of you to take care of that. 1, 7. The member, while the council is sitting, a member shall keep to his usual seat while addressing the council. 8, shall maintain silence while not speaking in the council. And 9, shall not obstruct proceedings, hiss or interrupt, and avoid making running commentaries when speeches are being made in the council. Under Rule 239, under other rules 238, I have allowed points of order, even in last half an hour. But when we go to 238, let us also be mindful that there is a Rule 235, 7, 8, and 9. And let us also observe these rules of 235, 7, 8, and 9. So when we do not observe these rules and still say 238, we have a right of point of order. The point of order is being allowed, but let us also be mindful of that. While saying this, let me also make it very clear that when honorable members of the House, from wherever they are sitting, whenever they are giving their address, or they're addressing the chair, or they're giving a debate, they should not be obstructed with. They have their own space. They have their own personal space. That is the right of every member of this House. And the same should not be infringed on, obstructed, or in any way violated that disturbs the member from giving his or her rightful contribution. May I request all the honorable members, you are all senior members, please take care of that. We are mindful of 238. Let us be, the point of, the discussion hasn't yet started. The discussion hasn't yet started. Please. No. I have not even started. The session is not even, let us take the speaker. The speaker was discussing. I'm telling you right now, I've just told you, 238 is something that I've just discussed. You have already asked the point of order, but you've not even discussed. Let me start with Shri Singh. So let us start with the debate. Shri honorable member. So let us start with the discussion. We are just starting the discussion. Please, we have to start the discussion. Let's start the discussion. What is the point of order when we have not even started the discussion? Please. Please, no. I think so. Shri Singh. No. We have not even started. Please, Shri Singh. Please, Shri Singh. Please. निवेदन कर रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं अथवा विश्व में विभिन्न आतंकवादी घटनाओं के कारण जो काल के गाल में समाये हैं, उनका अपराध क्या था? उनका अपराध कुछ नहीं था। उनका अपराध केवल इतना था कि वो अपने विश्वास, अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन इस दुनिया में एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि उनका ही विश्वास सर्वोपरि है। वो नस्लीय श्रेष्ठता के उपासक है। वो ये मानते हैं कि उनके विश्वास के अतिरिक्त इस दुनिया में किसी दूसरे विश्वास को नहीं माना जाना चाहिए, और जो उनसे अलग राय रखते हैं उनको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। उनकी सुबह ही ला से होती है। तो प्रारंभ में ही वो सबसे पहला जो वाक्य कहते हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि इस दुनिया में केवल एक ही है
और वह अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है, और पैगंबर उसका मोहम्मद है। अब अल्लाह के अतिरिक्त अगर किसी का कोई विश्वास है, अल्लाह के अतिरिक्त अगर कोई किसी उपासना पद्धति को मानता है, तो उनकी नज़र में वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। यही अपराध है उन लोगों का जो विभिन्न आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं। यही अपराध है उन लोगों का जो विभिन्न आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं। जो मध्य एशिया में कुर्द हैं, उनकी जो हत्याएं हुई हैं, उनकी हत्याएं केवल इसी अपराध के लिए हुई हैं कि उनकी जीवन पद्धति अलग है। Please. उनका विश्वास अलग है। I'm listening. मैं अपने विपक्षी One second. Point of order. How many? One second. Okay. Please. Point of order. Mane Derek ji, point of order. You see, I'm agreeing with you, and you think I'm fighting with you, sir. Point of order. I'm referring. You said something. I'm agreeing with you. I Please. don't want to fight with you. 235, sub-rule 7. 235, sub-rule 7 says. Please, Derek. I'm giving you the point. Yeah, make your point. 235, sub-rule 7 says. Please. Rule. Please. No counter. No comment, please. Sure. Yeah, please come. Yeah. I'm on your side, you think I'm not. So rule 235, sub-rule 7 says, and I quote, rules to be observed in the council. A member shall keep his usual seat while addressing the council. Sir, I would request you on this rule, you please check the video footage today from 2:02 to 2:06, 4 minutes and 10 seconds. One member spoke today without your permission from outside his seat. His seat is in the first row. Second, the leader of the house went to the 4th row and spoke. How did you allow this, sir? We have This is noted a point it. of order, I have sir. noted it. We will. How did you allow Right. this? You're talking about. Please, You're talking about our members. Please. Please. No, I cannot keep on taking points of order. कई सारे points of order आ चुके. 1 second. श्री भूपेंद्र यादव जी. Please sit. Mike. Complete, yeah. If you, I will read out rule number 110, scope of debate. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submissions of arguments either in support of the bill or for the rejection of the bill. For the last 5 minutes, the honorable member, not now, but previously when the house was adjourned, was speaking neither on the merits of the bill nor on the provisions of the bill. He was speaking only and only against the member. We'll look into it. He has been. I heard you. You agree with me? I heard you. So it be expunged. I heard you. Okay. Please, Shri Singh. Please, Shri So it Singh. must. अपनी सदस्य को बता देना चाहता हूं कि अभी तक मैंने जो विषय प्रस्तुत किया Please, है, no cross questions. बिल के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, इस बिल की आवश्यकता क्यों है, ये बिल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को मैंने स्पष्ट किया है विभिन्न घटनाओं के द्वारा। माननीय सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये वो देश है जिसने 5 युद्धों को झेला है। हमारे पड़ोस में 2 देश ऐसे जिनके पास परमाणु बम है। दुनिया के अनेक आतंकवादी संगठन, दुनिया के अनेक देश ये परमाणु तकनीक प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जैविक हथियार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, रासायनिक हथियार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए ये बिल जरूरी है। और इस बिल की आवश्यकता पर बल देने के लिए
इसकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में मैंने इन सारी घटनाओं का उल्लेख किया है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इसी देश में एक ऐसी विचारधारा भी है जिसको नक्सलवाद कहते हैं, और नक्सलवादियों का ना तो भारत के संविधान में विश्वास है, न भारत के विधान में विश्वास है, न भारत की परंपरा में विश्वास है, न भारत की संस्कृति में विश्वास है। और वो अगर उनका बस चले, अगर उनके पास ऐसे घातक हथियार आ जाए तो एक दिन के अंदर ही इस भारत की सारी व्यवस्था को तहस नहस करना चाहते हैं। इसलिए ये बिल बहुत ही आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक जिम्मेवार देश है। दुनिया के पटल पर भारत की गिनती एक बहुत मजबूत और बहुत जिम्मेदार देश के रूप में होती है। दुनिया भारत की ओर देखती है कि भारत किसी विषय के संदर्भ में अपने क्या विचार रखता है, भारत क्या पहल करता है, और भारत ने समय समय पर अपनी जिम्मेदारी का परिचय भी दिया है। इस विषय पर भारत 2002 से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में पहल करता रहा है, और भारत की पहल पर ही 2004 में संयुक्त राष्ट्र संघ पे एक संकल्प पारित हुआ जिसका क्रमांक 1540 था। उस संकल्प में यही कहा गया था कि ये जैविक हथियार, परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार, इनके प्रसार को रोकने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं अपने अपने देशों के अंदर कानून बनाएं, और उसका पालन करते हुए वर्ष 2005 में भारत ने इस तरीके का कानून बनाया था। लेकिन उस कानून में कुछ खामियां रह गई थी, उस कानून में कुछ कमियां रह गई थी, और उस कमी को सुधारने के लिए ही ये संशोधन बिल लेके आया गया है। उस कानून में क्या खामियां रह गई थी? 2005 में जो कानून आया था, उस कानून में परमाणु हथियार के निर्माण पर, परमाणु हथियार के आपूर्ति पर, परमाणु हथियार के परिवहन पर, जैविक हथियार, रासायनिक हथियारों के परिवहन पर, इस पर तो प्रतिबंध का प्रावधान था, लेकिन इसके जो वित्तीय पहलू हैं उसको नजरअंदाज कर दिया गया था। परमाणु हथियार, जैविक हथियार, रासायनिक हथियार आसमान से नहीं गिरते हैं, उनको बनाने के लिए वित्तीय आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, कहीं न कहीं से धन की आपूर्ति होती है। जब तक आप उस धन के स्रोत को नहीं बंद करेंगे, धन के स्रोत को जब तक नहीं समाप्त करेंगे, तब तक आप इनके निर्माण को, इनके प्रसार को, इनके परिवहन को नहीं रोक सकते। और इसीलिए ये जो संशोधन विधेयक आया है, इसी संदर्भ में आया है कि जो कमी 2005 के कानून में रह गई थी, उस कमी की पूर्ति किया जाए। और मैं माननीय विदेश मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सामयिक तौर पर इस विषय को यहाँ पर इस बिल के माध्यम से रखा है। सारे वित्तीय प्रावधान जो इस तरीके का परमाणु हथियारों के निर्माण में, परिवहन में, अथवा तकनीकी के ट्रांसफर में भी जो वित्तीय स्रोतों के माध्यम से धन उपलब्ध होता है, उसके लिए इस कानून में सजा का प्रावधान किया गया है, संपत्ति को फ्रीज करने का प्रावधान किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से काफी हद तक इसकी रोकथाम में हमको मदद मिलेगी। भारत ऐसा देश है तो जैविक हथियारों की जो संधि है 1972 में हुई है, जो रासायनिक हथियारों की जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1993 में हुई है, इन सारी संधियों में भारत शामिल है। 1968 की परमाणु प्रसार की संधि में भारत नहीं शामिल है, लेकिन भारत उसमें शामिल होना चाहता है। लेकिन दुनिया के अन्य देश एक विशेष योजना के तहत, विशेष षड्यंत्र के तहत शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। सभापति महोदय, ये कानून बहुत आवश्यक है, बहुत सामयिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान हमारे विपक्षी साथियों को भी सद्बुद्धि दे, वो भी आगे आए और इसका समर्थन करें। ये आज की आवश्यकता है, देश के लिए आवश्यक है, दुनिया के लिए आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी नॉट प्रेजेंट। श्री ब्रिजलाल जी, श्री आपका है, आपका नहीं आ जाते। श्री ब्रिजलाल जी। माननीय उप महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम
प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल पर बोलने का अवसर दिया है। महोदय, हमारी पार्टी के माननीय महेश जेठमलानी जी और हमारे मित्रों ने इसके कानूनी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। मैं कानूनी पहलुओं पर नहीं जाना चाहता, मैं केवल तथ्यों पर जाना चाहूँगा और आप ये सदन को बताना चाहूँगा कि महोदय, हमारे देश में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रयोग बहुत पहले से हुआ है। माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बैठे हैं, कांता कर्दम जी बैठे हैं, मैं मेरठ का एसएसपी था और उस समय आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था 13 जनवरी 1993। महोदय, एक बस जा रही थी, उसमें आरडीएक्स रखा गया, दौराला जगह है मेरठ में, और वहां जब उसमें धुआं उठने लगा, यात्री उतर गए, ब्लास्ट हुआ, पूरी बस ब्लास्ट हो गई। अगर उसमें यात्री होते सब मारे जाते। महोदय, अपने विपक्षी मित्रों को भी बताना चाहूंगा, हमें नहीं भूलना चाहिए 13 मार्च 1993 क्या हुआ था। मुंबई में 12 जगहों पर बम ब्लास्ट हुआ था। क्या इस्तेमाल हुए थे? कार बम। 13 कारों में आरडीएक्स भर करके और वहां पर स्कूटरों में भर करके, और वहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑल इंडिया रेडियो, एयरपोर्ट, होटल्स, जावेरी मार्केट, पासपोर्ट ऑफिस, इन सब में ब्लास्ट किए गए थे और 257 लोगों की हत्याएं हुई थी। 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे महोदय। और उस समय के मुख्यमंत्री थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज एनसीपी में है। जब ये ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने टीवी पर कहा कि इस ब्लास्ट में हिंदू मुसलमानों दोनों लोकेलिटी में ब्लास्ट हुआ है, दोनों लोगों को नुकसान हुआ है। वहां भी तुष्टिकरण महोदय नहीं, जरूरत नहीं है महोदय। उन्होंने यहां तक कहा, इस इशू को डाइवर्ट करना चाहा कि ये घटना श्रीलंका की LTTE ने किया है। तो इस तरह से मास डिस्ट्रक्शन, जहां 257 लोग मारे जाते हैं महोदय, उस घटना को दूसरा रूप देने का प्रयास किया गया। उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसमें 10 लोगों को फांसी और तमाम लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। महोदय, उसी केस का था याकूब मेनन, जिसको फांसी की सजा होनी थी, यहाँ एग्जीक्यूशन होना था। और हमारे तमाम जो विपक्षी मित्र हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात में खटखटाया था उस याकूब मेनन को बचाने के लिए। उस बंबई को जहां 257 लोगों की हत्या कर दी गई थी महोदय, उनको बचाने का प्रयास किया गया। महोदय, हम आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं, हम पंजाब के आतंकवाद को अच्छी तरह से जानते हैं महोदय। 1980 के दशक से एक पड़ोसी मुल्क ने खालिस्तान आंदोलन के आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया, घातक हथियार ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उपलब्ध कराए, आरडीएक्स का प्रयोग हुआ और उन्होंने जो संगठन थे उनके नाम थे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, बाबर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स, भिंडरवाला टाइगर फोर्स, इन सब को ट्रेनिंग दिया और मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स इस्तेमाल हुए और इस देश में हजारों लोग मारे गए। महोदय, अभी रिसेंट घटना है, वहां आपकी सरकार आई है और क्या हालत है कि हत्याएं होती हैं और टीवी पर विदेशों से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। महोदय, एक घटना हुई अभी 9 मई 2022 को मोहाली में, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली में क्या फायर किया गया? आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। महोदय, इस देश में पहली बार रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ। अखबारों में इसलिए ज्यादा नहीं आया क्योंकि वो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली में फटा नहीं। तो महोदय, इस देश में आतंकवादी घटनाओं में मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों का प्रयोग किया गया है। कुछ घटनाओं का मैं
जिक्र करना चाहता हूं सभा महोदय। 23 फरवरी 2005 दशा समेत घाट पर ब्लास्ट हुआ था। 7 लोग मारे गए थे, 9 लोग घायल हुए थे महोदय। अभी इसमें वलीउल्लाह नाम के एक आतंकवादी को फांसी की सजा हुई है महोदय। 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। 13 मारे गए, 50 घायल हुए। 29/10/2005 महोदय दिल्ली में धनतेरस के 2 दिन पहले सरोजनी नगर पहाड़गंज मार्केट में ब्लास्ट कराए गए। 62 मारे गए, 2010 घायल हुए महोदय। 7/7/2006 संकट मोचर वाराणसी में ब्लास्ट हुआ। हनुमान जी का उस दिन लोग पूजा करने गए थे, मंगलवार का दिन था। 28 मारे गए, 101 घायल हुए। आखिरकार उनका दोष क्या था? वो पूजा कर रहे थे और पूजा करते समय ब्लास्ट करके मारे गए महोदय। 11 जुलाई 2006 हमारे बॉम्बे के तमाम मित्र हैं, जरा ध्यान से सुन लें। वहां के ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट कराए गए थे। 209 मारे गए थे, 714 घायल हुए थे इंडियन मुजाहिदीन महोदय। 22/5/2007 गोलघर गोरखपुर ब्लास्ट कराया गया और उस केस को सहित 14 केसेस को समाजवादी पार्टी सरकार ने वापस लिया था। उसमें महोदय थोड़ा समय दे दीजिए मुझे। 25 अगस्त 2007 को लुम्बिनी पार्क गोकुल चाट हैदराबाद ब्लास्ट हुआ। 42 मारे गए, 54 घायल हुए। यूपी कचहरी ब्लास्ट नहीं, ठीक है, 23/11/2007 15 मारे गए, 40 घायल हुए। मुंबई घाटकोपर ब्लास्ट 28 जुलाई 2003 4 मारे गए, 32 घायल हुए। जावेरी मार्कर गेटवे ऑफ इंडिया 25 अगस्त 2003 54 मारे गए, 300 घायल हुए। जयपुर ब्लास्ट Please, 13 मार्च please, one second. 2008 One second, Bijlal ji, 1 second. 80 मारे गए, Bijlal ji, 216 घायल हुए। Bijlal ji, गफ्फार मार्कर Bijlal ji, 1 second. 30 मारे One गए, second, 90 Bijlal घायल ji. हुए। 25 I'm जुलाई taking his point of order. I'm taking his point of order. हमारा अच्छा He has asked first. No, please, 1 second. Shri Vinay Vishwam ji, you had asked a point of order. He had asked a point of order. I am not yielding, sir. Let me speak. Please, everybody else, please sit down. Please sit down. Shri Vinay Vishwam ji, point of order. Shri Vinay Vishwam ji, point of order. Yeah. Sir, I am not well. My BP is very high, so I cannot shout. Please give me some space. I got your point. Note. Okay, Therefore, thank I you, sir. immediately asked. Sir, my point Please. is that Yeah. 238. 238. Okay. Please. It is regarding rules to observe while speaking. Honorable member from the ruling bench, I respect him, Ajay Prasad Singh ji, while speaking, violated all the prescriptions and norms of the speakers. He mentioned here, La ilaha illallah. It's the beginning of a prayer of the crores of Indian citizens who are Muslims. And he made the translation. The first part was right. There is only one God. Then he exploded and he told, and that he is calling all others who don't believe in this shall be killed. Sir, it's very, very violating. Sir, this could be allowed, sir. No, sir. No, please. I request you. This is a very serious thing. This is going to affect the country's unity. Sir, I respect you and request you. Please, expunge it. I've heard you. I'm giving my ruling. We will examine it. If something like that is there, which should not be there, which is unparliamentary, it will be expunged. No, sir. I've given you my ruling. I've given you my ruling. Sir, one more subject. Shri, Sir, please sit down. Shri Bijlal ji. No, I cannot keep on taking points of order. No. Shri Bijlal ji. जी महोदय, Bijlal ji. 31/10/2008
गुवाहाटी ब्लास्ट 77 मारे गए, अहमदाबाद ब्लास्ट 26 जुलाई 2008 allow him to speak. 56 मारे गए। I'm taking points of order. I cannot keep on taking points of order one after another. इस ब्लास्ट Come में on. हमारे You also know there are points of order. No. उनकी हत्या का प्रयास Please, उनका था। महोदय बटला हाउस सबको मालूम है। No. I mean, you cannot be directly. You know very well. You cannot keep on asking points of order. There will be 10 members asking me points of order, and I'll keep on asking points of order. You're a senior member. You should tell them. Come on. I mean, it cannot become a practice. Point of order. Everybody sit down. Okay. I'm allowing only one point of order. No anymore. No other points of order will go on record. Please sit down. Please, everyone, please take your seats. Just 1 second. महोदय Please. Yeah, fine. 2, 3, 6. my point. Tell me. Rule number 236. Okay. When a member rises to speak, his name shall be called by the chairman. If more members than one rise to the same time, the members whose name is so called shall be entitled to speak. Sir, the time allotted to BJP has exhausted. They are giving names after names to prolong the discussion. That's not allowed. They have Shri exhausted. Bitasji, you made your point. And they are still going on with Shri it. Bitasji, you made your point. Sir, You made your point. I heard you. you see the screen. I heard you. You Everybody, cannot allow Shantaji, that. please. They Please. are giving Please. names after names. Derek Ji, I am responding to every point of order. Yes. And I hope that I'll also be heard when I'm making my point. No, you're already asking your members to come to the well. I'm watching it. I'm watching it from here. Bitasji, no, sit down. Bitasji, simply I'm telling you one thing. As a chair, you are not privy to how many members are going to speak after him, are you? No, listen to me. You made your point. As a chair, I'm making a point. I'm aware of the time. Many a times there are 2 members of your party and it is well beyond the time and I allow time. So let us not get into those minutes and seconds here. Please, no, I'm not going into that. Yes, please, Brijlal ji, no, I'm not allowing. सभापति महोदय, दूसरी घटना महोदय 7 दिसंबर 2010 शीतला घाट बस बनारस शीतला घाट आरती हो रही थी महोदय, वहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ब्लास्ट कराए गए थे। मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था उस समय। एक साल की बच्ची मां के गोद में बैठी थी, वो मारी गई थी महोदय। दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट न्याय के मंदिर 7 सितंबर 2011 15 मारे गए थे, 79 घायल हुए से तमाम अधिवक्ता थे महोदय। 13 जुलाई 2012 झावेरी ब्लास्ट ओपेरा हाउस दादर ब्लास्ट 26 मारे गए, 150 घायल हुए महोदय। बोध गया ब्लास्ट 5 मारे गए, 5 घायल हुए। जर्मन बेकरी ब्लास्ट 18 मारे गए, 60 घायल हुए महोदय। मोदी जी की हुंकार रैली थी पटना में 27/10/2013 को मोदी जी भाषण दे रहे थे, ब्लास्ट कराए गए महोदय, जिससे ये हो ना पाए। और उसमें 6 मारे गए, 85 घायल हुए। मुंबई में लश्कर तोयबा का हमला सबको मालूम है महोदय, 26/11/2008 175 लोग मारे गए थे, जिसमें 9 पाकिस्तानी आतंकवादी थे, 300 लोग घायल हुए थे महोदय। इस घटना को एक पार्टी ने भगवा आतंकवाद का रूप देने का प्रयास किया था। इनके नेताओं ने उसको कहा ये तो आरएसएस का काम है, ये तो बजरंग दल का काम है। एक इनके मंत्री आजकल जेल में है महोदय। मैं गया था बॉम्बे एक शादी में और वो कहने लगे अपने बीच में कि ये जो आतंकवाद की घटना है तो बजरंग दल ने किया है। मुझे नहीं रहा गया, वो नहीं जानते थे मैं कौन हूँ। मैंने कहा महोदय मैं यूपी एटीएस का चीफ हूँ, एसटीएफ का चीफ हूँ और मुझे अच्छी तरह से मालूम है आप क्या बकवास कर रहे हैं। और वही केंद्रीय मंत्री और वही स्टेट मिनिस्टर आज जेल में है महोदय। इन तमाम घटनाओं में 1184 लोग मारे गए और ये सब घटनाएं यूपीए गवर्नमेंट हुई थी महोदय। यूपीए गवर्नमेंट में महोदय मैं 2 चाहूंगा फंडिंग पर बोलना।
ये बड़ा ही आवश्यक है। मुझे 2 मिनट का समय दें महोदय। फंडिंग के लिए ये आज से फंडिंग नहीं शुरू हुई महोदय। आसिफ रजा कमांडो फोर्स बना था, दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था, आतंकवादी था, गुजरात लाया गया, वहाँ वो पुलिस पर हमला किया, मारा गया और उसके भाई आमिर रजा खान जो आज पाकिस्तान में बैठा है, आसिफ रजा कमांडो फोर्स बना। और वहाँ पार्थो राय बर्मन थे, 25 जुलाई 2001 खादिम सूट के मालिक थे, उनका अपहरण किया गया, 3 करोड़ 75 लाख वसूले गए थे महोदय। उसमें से $1 लाख मोहम्मद अत्ता अलकायदा को गया था, इजिप्ट का रहने वाला था, जिसने अमेरिका के हमला किया महोदय। यहाँ के हिंदू अपहरण करके पैसा लीजिए, आतंकवाद की फंडिंग कंक्लूड करें। इसी तरह महोदय 2 मिनट चाहूंगा, 2 मिनट महोदय। 11 सितंबर, इसके बाद महोदय 12 नवंबर 2000 को गुजरात राजकोट से 2 बॉयलर भास्कर पारिक परेशान की उठाया गया, 20 करोड़ मांगे गए, करोड़ों की फरौती ली गई और महोदय उसकी भी आतंकवाद की फंडिंग हुई। तो मेरा ये कहना महोदय, ये विषय बहुत संगीन है। मास डिस्ट्रक्शन का वेपन का इस्तेमाल हुआ है और वो हुआ है ऐसे मुल्क के इशारे पर इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा। मुझे इस बात का कष्ट है कि आतंकवाद पर राजनीति की गई, उत्तर प्रदेश में मुकदमे वापस किए गए और बम्बई जो घटना हुई, इतनी बड़ा घटना, उसको कहा गया भगवा आतंकवाद है। मैं विदेश मंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने आज इस इशू पर ऐसा बिल लाया है कि इससे इस सब पर नकेल कसी जा सकती है महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मौका दिया, थैंक यू, थैंक यू। Honorable members, one second. I have an announcement to make. I have an announcement to make. The announcement is that the Honorable Minister's reply will be tomorrow and the consideration of the passing of the bill will be taken up tomorrow. Right now we will go for permitted special mentions. Shri Subhash Chandra Pospilli ji, special mention. Absent. Dr. Prashant Nanda ji, absent. Shri Maharaja Sanojo Chambaji. Thank you, sir, for giving me this opportunity. My special mention is demand to launch a central sponsored pony project in Manipur, like the Tiger Project of India government. Sir, it is a well-known historical fact that Manipur is the birthplace of the internationally famed modern polo game, which was known to many of the British officers as Manipuri hockey on horseback. Lord Curzon, the then Viceroy from 1899 to 1905, in his Honorable Ministers, please take your seat. Please, Brijlal ji, Manya Brijlal ji, please apni jagah le. The house is not adjourned yet. Please, everyone, please take your seats. Please take your seats. Please continue. Please continue. Please continue. By the Manipuri, Please, everybody, please sit down. Please settle down, please. And though and tough, with a great stamina, is gradually becoming in danger, reducing its number below 1,000 due to the lack Anyone of who wants to ground leave will and leave a well-planned peacefully, quietly, farm. without any This disturbance. specific breed of pony is also associated with the myth and history of the state. The state government, under the leadership of our Honorable Chief Minister Sri N. Biren Singh, is trying its best effort to preserve Manipuri pony. However, due to the paucity of fund, it becomes a very difficult task for the state to bring up a huge project for preservation of this endangered rare species. Therefore, to save this pony breed from extinction, I request the government of India through this house for a central sponsored pony project in Manipur. Thank you, sir. Thank you. Shri Ramnath Thakur ji, not present. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde ji. सभापति जी धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान महाराष्ट्र के विदर्भ संभाग क्षेत्र के
एक महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि जुलाई 2022 में वर्धा एवं अमरावती जिला सहित पूरे विदर्भ में लगातार भारी वर्षा होने के कारण लगभग सभी नदी उपनदियों में बाढ़ की परिस्थिति निर्माण हुई। भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अनेक सामान्य नागरिकों की मृत्यु हुई एवं बिजली गिरने के कारण भी नागरिकों की जानवरों की मृत्यु हुई। इस परिसर में जानहानि भी हुई। लगातार हुई भारी वर्षा के कारण अनेक जगहों पर आवास क्षतिग्रस्त हुए तथा किसान वर्ग के फसल को भारी नुकसान होने की जानकारी सामने आ रही है। लगभग 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन के ऊपर की जो फसल थी वो क्षतिग्रस्त हुई है। अतः सदन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि इस घटना का संज्ञान लेकर इस कठिन परिस्थिति में सामान्य नागरिक तथा किसानों को आवश्यक राहत और तत्काल मदद केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को देने के लिए मिलने के हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री केसी वेणुगोपाल जी, नॉट प्रेजेंट। श्री एम शनमुगम जी। Thank you, Vice Chairman, sir. I want to raise to reduce the investment allowance, depreciation allowance to corporates and reduce the GST on essential commodities. Sir, I want to draw the attention of the House to a lacuna that has come in the income tax concession being given to the corporate companies and businessmen. Under the Income Tax Act, investment allowance up to 25% actual cost of new plant and machineries acquired and installed is given to the corporate assessee, which is being availed by the corporate giants. It was introduced to encourage industries to invest their capital about 50 years back. Now the position is entirely changed. The corporate giant take loan at a very nominal rate of interest from the banks for investment, where they get up to 25% investment allowance, which is transferred as capital reserves. Actually, the benefit of the investment allowance should go to the bank, since they are lenders, and if that happens, lion's share of non-performing assets will also be disappear. Similarly, depreciation allowance ranging from the rate 5 to 45%, depending on the category of equipment, is given to the companies under the Income Tax Act when GST is levied on even food articles like rice and hospital ICU room charges. In the name of revenue collection, there is no need to give the concession for corporate, which causes loss of exchequer. Hence, I would demand the government should remove the reduce of concession given the corporates to give the social justice and equity to the common people. Thank you, sir. Dr. Fauzia Khan ji. Thank you, sir. Sir, new research shows microplastics present in frequently consumed fruits and vegetables. Microplastics are synthetic or semi-synthetic, solid, water-insoluble, high polymer plastic particles of a size of range below 5 mm. Their small size allows them to pass through wastewater treatment plants and reach oceans through surface water bodies and rivers. Microplastics, sir, are non-biodegradable and persistent in marine and fresh water. Sadly, microplastics are less studied in India, despite the country being among the major plastic consumers and producer of 5.6 million tons of plastic waste annually. Microplastics in India are used in toothpastes, detergents, cosmetics such as face wash, among others. Plastic in India is still readily available across most states, used and disposed of casually. The country is still in nascent stages in its fight against plastic pollution, and the entry of microplastics only makes it more complicated. Studies have found microplastics in Gujarat and Chennai coast, Mumbai beaches, and Kerala Lake. International studies have also found
microplastics in drinking water, tap water, samples from Delhi and bottled water from Mumbai. Sir, Delhi and Chennai also. A National Institute of Oceanographic Study has found microplastics absorbed in fish tissues. Globally, several efforts have been made to control the use of microplastics. USA has banned the manufacture of products containing microplastics in 2017. The Canadian government prohibited production of toiletries containing microplastics from 2018. The UK banned the use of microbeads in cosmetics early this year, sir. I urge the government to address this issue suitably on the lines of these several other countries. Thank you. sir. Shri P. Wilson ji. Sir, I want to mention a matter of urgent public importance regarding shifting of census from the union list to concurrent list to enable states to give welfare measures to caste and communities. Sir, since 1931, no caste census has been conducted by the union government, and caste census data collected by the union in 2015 is not yet released. In 1992, constitutional amendment provided mandatory reservations for scheduled caste, scheduled tribe women in local body elections, but for other backward classes, they were only enabling in nature. When states have used these enabling provisions to provide OBC reservations in local bodies, they were struck down by the courts for want of empirical data. Though under Article 342A3, states have power to draw up SEBC list. However, the union alone has got power to conduct census as it is union subject. The largest community is ultimately denied with lawful share in education and employment in this country. Since states are not able to conduct any census to gather data on caste and communities, even to give any welfare measures for all, it is necessary to shift the entry census from union to concurrent list. Necessary action should be taken by the government in this regard, sir. Thank you very much. Thank you. Dr. V. Sivadathan ji. Chair, sir, here I am mentioning the issue concerns of the people living near forest. The thousands of common people in the remote areas of our nation are worried about their land and shelter. Sir, in the name of ecological sensitive zones, people are being forced to leave their homes. They are facing the threat of eviction from their own homeland. The land where they are living is their own land, not only them, but also their forefathers were born and brought up in these areas. But the recent developments in our country is creating a painful situation for them. Lakhs of people will be evicted from these areas. This will be a large humanitarian crisis. They are unable to build or develop the schools. The citizens in India should be facilitated with the proper healthcare institutions, but in this region, they will be unable to build or maintain the hospitals, buildings or schools, the labs and other essential healthcare facilities. The development of this region will be stunted. The real estate mafia is misusing this uncertainty. Sir, they are purchasing the land for cheap prices. The people living near the forest are in extreme psychological distress. Most of them are Adivasis and poor peasants. Whatever be the cost, the people should be protected. Their lives and livelihoods should be preserved. I request the immediate intervention of the government for the suffering people of these areas. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Shri Jain Chaudhary ji. Shri Jain Chaudhary. Absent. Shri Elamaram Karim ji. Yeah. Subject is to demand for withdrawing the decision to remove 387 leaders of rebellion from the dictionary of martyrs of India, a freedom struggle. Government of India have decided to remove 387 leaders of Malabar rebellion, including its brave leaders like Vairyangunnat Kunya Ahmad Haji and Ali Musliar, from the dictionary of martyrs of India's freedom struggle, jointly published by the Ministry of Culture and Indian Historical Research. It is an unfortunate move
and is a part of the efforts to portray the Malabar rebellion just as a revolt between two religions. India's freedom struggle adorned by sacrifice of thousands of such valiant martyrs as recorded by our historians. There is no logic in removing these 387 leaders, as they have been officially recognized as freedom fighters by the government of Kerala. Hence, I request the government to direct ICHR to revert its decision to remove 387 leaders from the list of freedom fighters from the 5th volume of the Dictionary of Martyrs of India's Freedom Struggle. Thank you. Thank you. Dr. Amar Patnaik ji. Sir, I rise to make the following statement relating to short supply of fertilizers to Orissa during the ongoing Kharif 2022. Sir, Orissa is facing a short supply of various fertilizers during the ongoing Kharif season. Given the good amount of rainfall received in July, the agricultural operations in the state have picked up, and so also the demand for various fertilizers. But the state doesn't have a sufficient supply of fertilizers to cater to these demands. There is a short supply of 26,586 metric ton of DAP, 6,275 metric ton of MOP, and 9,365 metric ton of NPKs against the requirements as of 30th June 2022. Further, to date, the supply of urea, DAP, MOP, and NPKs is only 25%, 16%, 10%, and 20% respectively against the planned requirements of July 2022. Further, I would like to bring to your kind attention that this is not the first time that Orissa is facing an acute scarcity of fertilizers in the Kharif crops. The issue has been persisting for over a decade now. During the last Kharif season, the overall supply of urea had been 62% against the allocation and 69% against the agreed supply plan, while for the other fertilizers, it was also 60% to 74%. Short supply of fertilizers adversely affects the agricultural production in the state and invites law and order situation in most of the districts. Therefore, I urge the government to ensure an adequate supply of fertilizers to Orissa as per monthly requirements, including the backlog of previous months to warrant smooth agricultural operations, farmers' welfare, and avoid agrarian unrest. Thank you, sir. Thank you. Shri Sujit Kumar ji. Thank you, sir. Sir, I rise to demand improved rail and road connectivity to the villages affected by left-wing extremism, LWE, in Odisha. Sir, although the efforts by the Odisha government have been successful in pushing the instances of violence related to LWE to the fringes by ushering in much-needed development, sporadic acts of violence continue to threaten lives. In 2021 alone, sir, there have been 32 instances resulting in 3 deaths in the state of Odisha. Recently, one such unfortunate act of violence occurred in June 2022, wherein 3 brave commandos belonging to the CRPF were martyred in the Nuapara district of Odisha. To curb such future violence, it is essential to increase connectivity by providing linkages to remote areas on the developmental map. Sir, therefore, the state government has been continuously requesting the union government to sanction projects to boost railway connectivity between the districts such as Malkangiri to Bhadrachalam and between Nabarangpur to Junagadh. All of these are in western and southern Odisha. Additionally, the development of the stretch of NH 326 from Jaipur to Motu via Malkangiri to 4-lane road connectivity is imperative to boost development. Additionally, connectivity can also be achieved by doubling the sanction of road construction projects under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) to connect remote villages of the areas heavily affected and infested by LWE. I would therefore, sir, request active support from the central government through you to eliminate these unfortunate incidents and keep LWE in check. Thank you. Thank you. Shri Santosh Kumar P. I rise to make this statement. We are witnessing an alarming rate of unemployment in general and among the educated youth in particular. This is an issue that needs urgent intervention.
As per the data of Center of Management of India's Economy, the rate of unemployment in the country was 7.83 in May. However, the rate of unemployment is about 13% among educated youth. The CMIE also states that 1 in 5 college graduates are unemployed. This high unemployment rate among the college educated has caused widespread youth disillusionment, and it reflects the growing crisis in India's job markets. In February 2022, the Union Ministry of Personnel stated that there are 8 lakhs job vacancies in government, but only 78,000 have been filled. At the same time, CMIE data itself states that 17 million Indians are actively looking for a job. Shockingly, more than 12 million people had applied for 35,000 clerical jobs at Indian Railways. This is a clear reflection of the alarming rate of unemployment among Indian youth. The recent government documents accounted for 37% of documents reveal a declining trend of regular employees in the central public sector enterprises. Temporary workers accounted for 37% of the employees in 2019 to 20 compared to 19% in 2016. Hence, there is a huge gap between demand and supply of job. We shouldn't forget that fact that Make in India program had promised to create 100 million jobs by 2022. Therefore, tackling unemployment among youth should be the most critical policy priority of the government, and it needs steps to be taken in this regard. Very important, sir. I support. Thank you. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Tuesday, the 26th July 2022.